लास्ट टॉपिक की कंटिन्यूएशन है ये भी, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड सिटीजनशिप। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था और उसको इसलिए छोड़ दिया था कि अभी भी उसकी 50 स्लाइड है, तो लास्ट टाइम 60। हाँ, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड सिटीजनशिप, दोनों दोनों ये एक ही topic। हाँ, उसी की कंटिन्यूएशन है। लास्ट टाइम हमने इससे पिछला टॉपिक जो था वो कंक्लूड किया था और साथ में इसको स्टार्ट किया। आज इसको कंक्लूड करेंगे, इसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा और वो है जी ईयू ह्यूमन राइट्स रह जाएगा जी मैम इसके बाद, लास्ट टॉपिक। ठीक है जी। राइट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड, right of residence for job seekers. In the Collins case, the second question posed to the court concerned whether directive granted a right of residence to a person seeking work. In line with so and so, the court held that the right of residence derived from Article 45 TFEU may be limited in time, but if after expiry of that period, the person concerned provides evidence that they are continuing to seek employment and that they have genuine chance of being employed, they cannot be required to leave the territory of the host member state. So last में हमने पढ़ा था कि जो जॉब सीकर्स होंगे उनका टाइम स्पेसिफाई कर दिया था ईयू लॉ ने कि जी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक अगर वो जॉब सीकर हैं किसी दूसरी मेंबर स्टेट में, तो वहां पर वो जो होस्ट मेंबर स्टेट है उसके पास ऑप्शन है कि उसको एक टाइम टाइम फ्रेम जो है वो उनका बना दें कि इस टाइम तक वो वहां पे स्टे कर सकते हैं, इसके अलावा वो वहां पे स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डिसएडवांटेज ये होता था कि वो इकोनॉमिकली बर्डन होते थे एक स्टेट के ऊपर। तो जब तक वो वहाँ पे जॉब सीकर्स थे तब तक उनको सारे राइट्स उन्होंने प्रोवाइड करने थे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उसके अलावा उनका ट्रीटमेंट है मेडिकल का, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है स्टेट ने बीइंग ईयू मेंबर स्टेट। और वो सारी फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो वहाँ पे कोई भी सिटीजन जाएगा किसी दूसरी मेंबर स्टेट का, वो भी ईयू का मेंबर होगा, तो उसके पास सेम राइट्स होंगे वही जो उसके अपने मेंबर स्टेट के होंगे, अपने मेंबर स्टेट के सिटीजन के होंगे। तो सेम राइट्स एंजॉय करने के लिए उसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होस्ट मेंबर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया था कि 6 माह का टाइम होगा, 6 माह तक अगर वो उसके पास जेन्युइन कॉज होगा कि वो वहां पे जॉब जो है उसको मिल जाएगी, अगर इस टाइम तक नहीं मिली तब उसका टाइम पीरियड जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, अदरवाइज वो उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। The court held that the right of residence derived from article may be limited in time, but if after expiry of that period, the person concerned provides evidence that they are continuing to seek employment and they have a genuine chance of being employed, they cannot be required to leave territory of the host member state. Article 6 of directive appears to be less generous in providing for a right of residence of up to 3 months, but see further the discussion above on job seekers rights, जो हमने ऊपर डिटेल में पढ़े हैं जॉब सीकर्स के राइट्स।
उसके उससे रिलेटेड बात हो रही है, इसी टॉपिक का हिस्सा है, ठीक है जी। Chapter 4 of directive also provides for a right of permanent residence after 5 years of continuous residence for union citizens and their family members who are non-union citizens. This applies to both workers and the self-employed. ठीक है जी। Article 7 of the directive lays down the condition for a right of residence for more than 3 months for primary movers and family members. If they are not workers or self-employed, they must have sufficient resources not to become a burden on the financial system of the host state and must have comprehensive sickness insurance. This includes students. The status must be retained in case of sickness, involuntary and unemployment or taking a vocational training connected with the previous employment. ठीक है जी। एक्सेप्शंस भी थी कि किन किन एक्सेप्शन में उसको वर्कर कंसिडर किया जाएगा। उसमें जो हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी वोकेशनल कोर्स के हवाले से पढ़ी थी या ट्रेनिंग के हवाले से पढ़ी थी। अगर किसी दूसरी मेंबर स्टेट में कोई सिटीजन जो है वो ट्रेनिंग ले रहा है और उस ट्रेनिंग का कनेक्शन उसकी जॉब के साथ है, ठीक है, तो उसको भी एज ए वर्कर कंसिडर किया जाए। हमने लास्ट टॉपिक में ये डिफरेंस देखा था कि किसको वर्कर कंसिडर किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक्सेप्शन में जो थी वो चीजें, उनमें एक थी कि ट्रेनिंग प्रोसेस जो है या वोकेशनल कोर्सेज जो हैं उनको भी ट्रीट किया जाएगा एज ए वर्कर जो उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी। तो मुझे हाँ, बेस मैक्सिमम टाइम स्पेन जो है ना वो 6 मंथ्स, ठीक है। उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एक्सटेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास कोई जस्टिफाइड कॉज होगा ना या रीजन उसकी एक्सेप्टेबल होगी उस बेसिस पे, और ये डिस्क्रेशन जो है ये नेशनल कोर्ट के पास है कि वो इस चीज को डिसाइड करे आया जो उसका कॉज है वो जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। ये डिस्क्रेशन नेशनल कोर्ट के पास है, ठीक है जी। Equal treatment for job seekers. In case the court said that the job seeker does not enjoy the same rights as the worker and that except for the provisions on equal access to employment, X regulations so and so did not apply to job seekers, it therefore held that entitlement to the same social and tax advantages as national under Article 7.2 of regulation did not apply to the job seeker in this case. However, in Collins, the court extended the fundamental principle of equal treatment in union law to benefits of a financial nature such as job seekers allowance. ठीक है जी। एक अलहदा से उन्होंने उनके लिए जॉब सीकर अलाउंस वाला कैटेगरी जो है उसकी रखी हुई है, लेकिन उसको भी फुलफिल करने के लिए सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। अगर तो वो जॉब सीकर जो है जो होम स्टेट से किसी होस्ट मेंबर स्टेट में गया हुआ है, ठीक है, उसके पास वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करता है तो वो जॉब सीकर अलाउंस के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी लेट डाउन की हुई है, हमने जो ऊपर फर्दर डिस्कशन की थी इसके ऊपर, उसमें वो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें उसको जॉब सीकर को अलाउंस मिल सकता है, ठीक है, वो उन्होंने स्पेसिफाई किया। ये डिफरेंस है एक जॉब सीकर में और एक वर्कर में। वर्कर के जो बेनिफिट्स होंगे होस्ट मेंबर स्टेट में वो डिफरेंट होंगे और जॉब सीकर के जो हैं वो डिफरेंट होंगे, उनको इक्वल राइट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है क्योंकि वो परमानेंट रेजिडेंट कंसिडर नहीं होंगे ना, वो तो जॉब के लिए हैं। जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती, ठीक है, उसकी नेचर डिसाइड करेगी कि वो परमानेंट रेजिडेंट है या नहीं, ठीक है। जब तक वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं होगा तो ये तो उनके इकोनॉमिकली जो होस्ट मेंबर स्टेट होगी उस पर बर्डनाइज करेंगे ना जितने भी जॉब सीकर्स होंगे, तो उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए उसको स्कोप को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है वर्कर में और जॉब सीकर। कोई एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन जॉब सीकर अलाउंस रखा हुआ है ना उन्होंने,
ठीक है, जब तक उसको जॉब नहीं मिलेगी उस अलाउंस से वो कंपनसेट करेंगे। ठीक है जी। जी, दो नेशनैलिटी मतलब? दो नेशनैलिटीज कैसे है? वो तो दोनों ईयू के मेंबर हैं। हाँ, वो तो ईयू है ना, वो तो ईयू के ईयू में के मेंबर्स हैं। जर्मनी भी ईयू के मेंबर है, फ्रांस भी ईयू का मेंबर है। तो ईयू तो ये बात ही नहीं कर रही, जब ईयू की बात हो रही है तो वो जर्मनी फ्रांस तो बात ही नहीं करता। ईयू बात करता है कि जो जितने भी ईयू के सिग्नेटरीज हैं वो सब के सब ईयू के मेंबर्स हैं, ईयू के सिटीजन हैं। ठीक है। हाँ, वो तो ड्यूअल नेशनैलिटी वाला वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं प्रिवेल कर सकता ना। वो तो है ही मेंबर्स ईयू के। या तो आप बात करें जो जाहिद ने बात की है कि पाकिस्तानी भी हो, जर्मन नेशनल भी हो, या यूएस का नेशनल भी हो और जर्मन नेशनल हो, या फ्रांस का नेशनल हो, उसमें क्राइटेरिया तो वो भी उसको कंसिडर वही करेंगे, वो ईयू का मेंबर है क्योंकि उसके पास जर्मनी की नेशनैलिटी तो है ना। In case a French national did various jobs in a Salvation Army hostel in Belgium as a part of personal socio-occupational reintegration program, it was for the national court to decide whether he was a worker under Article 45 TFEU. But even if he was not, the court said that as he was an EU citizen lawfully resident in Belgium, he could not be discriminated against when accessing the minimum subsistence allowance. When Collins decided in March 2004, the Court of Justice was clearly moving in the direction of holding that job seekers are entitled to social security benefits. Directive 2004/38, adopted on 29 April the same year, heads in the opposite direction. It provides in Article 24(2) that the host member state shall not be obliged to confer entitlement to social assistance during the first 3 months of residence or when where appropriate the longer period provided for job seekers। ठीक है जी। जो सोशल असिस्टेंस थी उसको भी उन्होंने लिमिटेड कर दिया है कि 3 मंथ्स या उससे ज्यादा का पीरियड के ऊपर जॉब सीकर उनको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। आधे में पानी का दो।
is required. Only workers, the self-employed, and their families are entitled to grants or loans for study, including vocational courses. The court has, though, limited the exception in Article 24(2) by ruling that benefits which are intended to facilitate access to the labor market do not constitute social assistance and are covered instead by Article so and so. In case the court held that economically inactive union citizens residing in a member state other than their home member state have the right to be accepted into the public sickness insurance system of the host member state. However, this court acknowledged that the host member state would be entitled to impose conditions on this acceptance, subject to the principle of proportionality, to ensure that, along the lines of Article 7(1)(b) of Directive 2004, the individual does not become an unreasonable burden on the public finances of that member state. ठीक है? पब्लिक सिकनेस इंश्योरेंस सिस्टम्स जो हैं वो भी इसके लिए भी डिस्क्रेशन दिया हुआ उन्होंने होस्ट मेंबर स्टेट, ठीक है, कि वो सर्टेन क्राइटेरिया जो है वो उनके लिए मेंशन करेगा कि कौन किन किन को ये बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ वो एक प्रिंसिपल जो पीछे सारी जगहों पे अप्लाई होता आ रहा है वही वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जो है वो मद्देनजर रखते हुए इस चीज को डिसाइड करेगा कि उसको बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है जी। A more restrictive approach, the court was asked to revisit the issue of whether economically inactive European Union citizens who relocate to another member state should be excluded from certain social benefits. In case the ECJ held that with respect to access to benefits, national of member states can claim equal treatment with national of the host member state only where their residence complies with the condition stipulated in the directive on free movement of EU citizens. Under the directive, the host member state is not required to grant social assistance during the first 3 months of residence, and where the period of residence exceeds 3 months but is less than 5 years, an economically inactive resident must have sufficient resources of their own. ठीक है जी, समझ आ गया हैं? जी मैंने कहा शायद आपने The court was asked to revisit the issue of whether economically inactive European Union citizens who relocate to another member state should be excluded from certain social benefits. In case the ECJ held that with respect to access to benefits, national of member state can claim equal treatment with nationals of the host member state. ठीक है जी? Only where their residence complies with the conditions stipulated in the directive. ठीक है? Under the directive, the host member state is not required to grant social assistance during the first 3 months. ठीक हो गया? And where the period of residence exceeds 3 months but is less than 5 years, an economically inactive resident must have sufficient resources of their own. हाँ, इकोनॉमिकली इनएक्टिव मतलब वही होगा जो जॉबलेस हो, हाँ, काम नहीं कर, वो जॉबलेस है, ठीक है, उसके हवाले से जो प्रिंसिपल है ना, वैसे तो ये है कि 3 मंथ तक वो सोशल बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर सकता, इक्वल बेनिफिट्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी, इक्वल बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर सकता जो नेशनल्स को मिलेंगी 3 मंथ्स तक, ठीक है, उसके बाद उसको मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इकोनॉमिकली इनएक्टिव है फिर उसके पास अपने रिसोर्सेज इतने होने चाहिए कि वो वहां पे सरवाइव कर सके, ठीक है, फिर स्टेट के खर्चे पे वो सरवाइव नहीं करेंगे। बेसिकली यूके जो है वो वेलफेयर स्टेट है ना, ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट जो है उसका काम होता है कि वो जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको कंपनसेट करे ड्यूरिंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट फेज,
वो उस उनको कंपनसेट करे, ठीक है। तो अब वो एक जो नेशनल होगा उनका, ठीक है, उसको तो वो बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन एक दूसरी मेंबर स्टेट का बंदा उठ के आएगा तो ईयू लॉज के मुताबिक उसको भी सेम बेनिफिट्स आपको देने पड़ेंगे। फिर इसीलिए उन्होंने सर्टन रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, किन किन सूरत हाल में वो उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करेंगे, किन किन सूरत हाल में नहीं करेंगे। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना होती तो फिर तो हर बंदा जाके दूसरी स्टेट में रहना शुरू कर देता और वहां से बेनिफिट्स लेता रहता, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने इसलिए इम्पोज की हैं ताकि अगर कोई इस इरादे से जा रहा है कि उसने दूसरी स्टेट में जॉब ही करनी है, इनको आज का दिन मिला था ये क्लास देने के लिए, हैं, बाय कॉर्ड कर देते हैं क्लास। इंश्योरेंस नहीं हुई तो क्लेम कर लेंगे, उन्होंने करवाई हो। क्या हुआ फाइनेंशियली? अच्छा, वो तुम लोगों ने बाहर आना नहीं है, फिर भी उन्होंने टॉर्चर करके क्या कमाल कर लेना है। तुमने फ्री हो 10:30 का उन्हें टाइम दिया था, फिर 11 बजे क्लास में आई हो, ठीक है। तो फर्क कहाँ पे पड़ रहा है ये तो, है। वो ऐसा किया करो ना, एक फोन लेके आया करो जो खराब हुआ करो, उनको जमा करवा दिया करो। हम्म। वैसे मोबाइल रख के करना क्या है क्लास में, ये तो जरा मुझे एक्सप्लेन करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इसीलिए उन्होंने आपको बेसुकूनी देने के लिए मैंने कहा कि क्लास में बच्चा सुकून से बैठा हुआ है तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहा ठीक तरीके से, उसको बेसुकूनी रहनी चाहिए। लॉक लगाया है मैंने, आजकल कोई इतना सादा नहीं है, दोनों तो लॉक लगाए होते हैं, स्क्रीन लॉक अलग होता है, फेस आईडी अलग लगाई होती है। वो इतने वेले हैं कि आप लोगों की चैट पढ़ने के लिए वो आपके लॉक खोले के बैठ के आपकी पर्सनल लाइफ देखने के लिए, ये इतना आसान काम नहीं होता ना। हाँ, आप उनको मैसेज करेंगे जी हम मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, इमरजेंसी कॉल के लिए मेरे पास ये नंबर है इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट वालों को कॉल करें और उनको बताएं कि बच्चे से बात करवाइए। सौ रास्ते होते हैं। वो अबू बकर, एक मिनट माइक और जरा पंजाबी। ठीक हो गया, समझ आ गई है, अभी पॉइंट क्लियर है। ये शैतानी करता जान बूझ के, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टाइम आगे पीछे निकल जाए, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं, अब किसी तरह टाइम तो पास करना है ना। Therefore, the court held that member state is not precluded
from refusing to grant social assistance to economically inactive EU citizens to move to another member state. The court added, however, that each case must be examined individually without taking account of the social benefit scheme. ठीक हो गया? अब ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने पहले ऑलरेडी बताया था, ये उसी से रिलेटेड बात है. In case the court reiterated the principle that EU citizens cannot claim equal treatment regarding access to social assistance benefits with nationals of the host member state unless their residence in the host member state is in compliance with the condition in the citizenship directives. Therefore, it held that denying applicants whose right of residence in the host member state arises out of search for employment entitlement to social assistance does not contravene the principle of equal treatment. ठीक है जी? Derogation from the free movement of person. Article 45(3) TFEU lists 3 possible grounds for refusing entry to or expelling a national of other member state: public health, public security और public policy. ठीक है? अब ये 3 चीजें आप इसके नाम पे जहाँ मर्जी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करें, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन नेक्सस जो है वो मेंबर स्टेट के साथ है और उसका नेशनल लॉज के साथ. ठीक है? वो किसी भी पॉइंट को अगर रेज कर देंगे तो उसकी बेस पे आप जो है वो restriction impose कर सकते हैं. These exceptions also apply to establishment and services. Establishment से related बात हो रही है कंपनीज, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड इंडस्ट्रीज जो भी चीजें हैं, और सर्विसेज डिफरेंट सर्विसेज हैं, जॉब्स की होंगी या लेबर सर्विसेज किसी किस्म की. The provision in Article 27 to 33, Chapter 4 of Directive take into account the case law of the Court of Justice. The grounds of derogation will be subject to the principle of proportionality, and member states are required to take into account a number of specific factors before a person can be expelled. ठीक है? वही बात है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करना है और सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने देखते हुए उसके बाद उसको वहां से एक्सपेल करना. ठीक है जी? More generally, the court has recognized a broad category of additional public interest grounds or objective justification similarly to the context of the free movement of goods and free movement of establishment and services. As with the other freedoms, derogation from the free movement of workers are subject to compliance with the principle of proportionality. ठीक है जी? Limitations on the ground of public policy with public security or public health. Public health is one of the express derogation provided by Article 45 TFEU. Furthermore, Article 29 of Directive 2004 identifies 2 public health situations that may justify restrictions on free movement: disease with epidemic potential recognized as such by the World Health Organization. एपिडेमिक पोटेंशियल का आइडिया है 3 किस्म के डिजीजेस होते हैं. ठीक है? एंडेमिक है, एपिडेमिक है और पेंडेमिक है. ठीक है? एंडेमिक वो होता है जो थोड़े टाइम के लिए होता है और सर्टन एरिया को इफेक्ट. ठीक है? एपिडेमिक वो होता है जो नेशनल लेवल पे इफेक्ट, और पेंडेमिक होता है जो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, जैसे कोविड था. ठीक है? तो यहाँ पे एपिडेमिक की बात हो रही है, लेकिन रिकग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अदर इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज, बट ओनली इफ रिस्ट्रिक्शंस आर also being imposed on national of the host state suffering from these conditions. Article 29(2) states that if the disease occurs after 3 months from the date of arrival, the sufferer cannot be expelled on this ground. Article 29(3) allows member states to require a medical examination within 3 months of arrival to check whether a person is suffering from a proscribed disease, but only if there are serious indicators that it is necessary and not as a matter of routine.
अब ये पॉइंट समझ आ गए। इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर वो बंदा वहां पे आ गया और उसके 3 माह के बाद जो है वहां पे वो डिजीज किसी भी कंट्री में मेंबर स्टेट में वो आती है, तो उसके बाद एक सर्टेन कंडीशंस होंगी और उसका टेस्ट किया जाएगा, रूटीन टेस्ट होगा, और उसके बाद उसको चेक किया जाएगा कि वो ऐसे लगता है आप 16 चला रहे हो। नहीं तो वो जब सेशन चल रहा होता है ना, ये जब परेड की तैयारियां कर रहे होते हैं, वो तबाही होती है। घर से 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस बनता है ना, तो वो तो F-16 के लिए तो कोई खतरा नहीं है। वो वहां से जब तो एक हाँ, ये मेरा ख्याल है अली को सेटिंग करके उसने कहा जब तक मैं बोलूंगा ठीक है, सब बोलेंगे कितना शुरू करो। Obviously, during the pandemic, free movement of person has been restricted by pandemic की बात हो रही है, वही कोविड की बात, ठीक है जी। The member state, in the name of public health and the precautionary principle, the EU has taken some measures to address this through, although not free from criticism. For instance, the COVID certificate regulation 2021 issued on a citizenship legal basis. वही, अगर आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वो तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने कर दिया। Public policy and public security. The interpretation of the concepts of public policy and to a lesser extent public security has not been straightforward. Early on in case, the court held that member state had some discretion as to whether an individual conduct was contrary to public policy. The court referred to Article 3.1 of Directive, later absorbed by Directive so which provided that measures taken on the grounds of public policy or public security shall be based exclusively on the personal conduct of individual concerned. Okay, the court considered that a person's ongoing associations with the body or organization could in itself constitute a voluntary act which may be considered as personal conduct. The fact that the relevant organization was not prohibited and thus national could work for it was then considered by the court. The court recognized a certain amount of discretion for the member state and held that it could still refuse entry to an individual on the basis that their conduct was socially harmful, although the organization by which the individual was to have been employed was not prohibited in the member state. The court pointed out that the right of residence may be refused to nationals of other member states who wish to take up employment, even when it could not refuse its own nationals. ठीक है, मतलब वो यहाँ पे उनको ये डिस्क्रेशन दे रहे हैं कि अगर वो अपने नेशनल्स को किसी स्टेज पे कोई राइट रिफ्यूज नहीं करते, किसी दूसरे मेंबर स्टेट के सिटीजन को वो राइट रिफ्यूज कर सकते हैं ऑन द सर्टेन कंडीशंस। और उससे पहले वो ये बात कर रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो काम करता है और उसका कंडक्ट खराब होता है, ठीक है, तो उसको इंडिविजुअली जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ना कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, ठीक है, या उस दूसरी स्टेट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्नाइज करती है, ठीक है, तो उसके लिए अगर वो काम कर रहा है तो उसका जो कंडक्ट होगा उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखा जाएगा। और अगर स्टेट में अप्लाई करेगा तो उसको रिफ्यूज भी किया जा सकता, ठीक है। और ऐसे बंदे को जॉब, अगर वो जॉब सीकर बन के किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, और उस कंडीशन में भी रिफ्यूज किया जा सकता है जिस कंडीशन में अपने वो नेशनल को रिफ्यूज नहीं करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर है
लेकिन उसके साथ साथ वो सर्टेन कंडीशंस बता रहे हैं जिनके तहत वो उसको रिफ्यूज कर सकते हैं. However, in case also, the court did not accept that a member state could deport those who were working in a non-prohibited job. ठीक है जी. In case the court considered the amount of discretion available to member state when restricting the free movement of person, the court found that insofar as it may justify certain restrictions on the free movement of person, subject to community law, recourse by a national authority to the concept of public policy, presupposes in any event the existence in addition to the perturbation of to the social order, which may infringement of law involves of a genuine and sufficiently serious threat affecting one of the fundamental interests of society. Joint cases concerned Greek and joint cases concerned Greek and Italian nationals who were long-term residents in Germany who had been served with deportation orders. As is increasingly the case, the court considered the free movement articles as well as Article 21 and the general principles, in particular fundamental rights and respect for family life. The court stated that Article 45 and Directive precluded national legislation which provided for the expulsion of foreign nationals without taking into account factual matters which may have contributed to the substantial diminution of a present threat which the conduct of person concerned constitute to the requirements of public policy. Instead, the national authorities should balance the threat and the fact that the person had received a particular sentence for specific offenses against the fact that they had resided for many years in the host member state and could plead family circumstances against the expulsion. ठीक है जी. The Citizenship Directives repealed and replaced Directive Article 28(3) of the Citizenship Directive inserts a specific provision against expulsion decision against a union citizen who has resided in the host state for the previous 10 years unless such a decision is based on imperative grounds of public security. Case, the court clarified that when a member state makes an expulsion order, the national authorities should look to all relevant factors, in particular the length and frequency of individual absence from the host member state and the reason for the absences.
The court also held that in order for the expulsion to be proportionate where the individual has spent most of his life in the host state, the reason for expulsion must be based on serious and objective reasons. इस सारे सिनेरियो में वो एक ही बात कर रहा है कि अगर सोशल सिक्योरिटी की या पब्लिक सिक्योरिटी की बात की भी जाए तो उसमें भी अगर वो किसी को वहां से एक्सपेल करते हैं तो उससे पहले उनको ये देखने की जरूरत है कि उसको वहां पे रहते हुए अरसा कितना होगा। अगर तो वो लंबे अरसे से वहां पे रह रहा है तो उसको उसी तरह कंसिडर किया जाएगा। फिर ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस में वो इन्वॉल्व है। अगर तो ऑफेंसेस की नेचर इतनी सीरियस नहीं है या जिस ऑफेंसेस में वो इन्वॉल्व रहा है उसकी पनिशमेंट ऑलरेडी उसको मिल चुकी है तो उसका जो आउटकम है उसकी फैमिली मेंबर्स को या बाकी उसके रिलेटिव्स को नहीं मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ इतने टाइम के बाद उसको आप एक्सपेल करने से पहले बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे जिनको आप फॉलो करते हुए उसको एक्सपेल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा जिसने पूरी जिंदगी जो है वहां पे स्पेंड की हुई है और उसको किसी ऐसे सोशल ग्राउंड के ऊपर आप वहां से रिमूव कर दें कि वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, हालांकि वो ऐसा ना हो या उसको उससे रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी उसको पनिशमेंट मिल चुकी हो या ऑफेंस की जो नेचर है वो इतनी सीरियस ना हो कि आप उसको एक्सपेल करने जा रहे हो। तो ये सारे ग्राउंड जो है इनको कंसिडर करते हुए आपने उसके एक्सपेल्शन ऑर्डर्स जो है उसको पास करना। ठीक हो गया जी। इसको हाँ इससे पिछली जो स्लाइड है हाँ ठीक है। हाँ हाँ वो भी एक्सपेल कर देंगे ना उसी से बात बता दिए हैं कि आप किन किन चीजों को फॉलो करते हुए ये ऑर्डर पास है। सिटीजनशिप भी एक्सपेल कर सकते हैं अगर वो होस्ट मेंबर स्टेट में। ये बेसिकली बात हो रही है होस्ट मेंबर स्टेट की, वापस जाएगा होम मेंबर स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल वो यही बात करें लेकिन उसको उन्होंने कहा है कि ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव राइट नहीं है होस्ट मेंबर स्टेट के पास किसी भी रीजन को जो है वो सोशल हार्म डिक्लेयर करके उसको एक्सपेल कर। उस एक्सपेल्शन ऑर्डर के लिए कंपलसरी है कि वो पर्टिकुलर ग्राउंड्स को फॉलो करते हुए उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किए। मजाक की बात वो यही तो बात कर रहे हैं। ये सिटीजनशिप की जो बात हो रही है ना, अच्छा इसमें एक चीज बड़ी क्लियर रखने की जरूरत है। वो ये है सिटीजनशिप की जहाँ पे बात हो रही है वो नेशनल स्टेट की बात नहीं हो रही, वो होस्ट की बात हो रही है हर जगह। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं ना वो मोस्टली आप होस्ट मेंबर स्टेट की बात करेंगे। जहां पे हम ईयू के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ईयू के इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, वहां पे नेशनल स्टेट की बात हो रही होगी। ठीक है, ईयू के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एज इट इज अप्लाई होंगे लेकिन सर्टन उन्होंने कंडीशंस बता दी हैं कि यहाँ पे जो नेशनल लॉ है उसके पास डिस्क्रेशन है। ठीक है, अदरवाइज उन्होंने एज इट इज करना है। यहाँ पे जहाँ पे सिटीजनशिप की बात होगी बाकी सारी चीजों की बात होगी वो होस्ट मेंबर स्टेट से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, हमने फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल की बात की, वो सारा कुछ वो भी यही बात कर रहे हैं कि होम मेंबर स्टेट से होस्ट मेंबर स्टेट में जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। मोस्टली टॉपिक जो हमने आगे पढ़े हैं ना वो होस्ट मेंबर स्टेट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, कि वो जो नेशनल जो अपनी स्टेट में राइट्स एंजॉय कर रहे होते हैं जब वो होस्ट मेंबर स्टेट में जाते हैं तो उनका वहां पे स्टेटस क्या होता है। स्टेटस उनका सेम रखना क्यों जरूरी है कि ईयू के जितने सिटीजन हैं उनको इक्वल राइट प्रोवाइड करना है। बेसिक पर्पस तो ये है। अब हर स्टेट के लॉज डिफरेंट होंगे, नॉर्म्स डिफरेंट होंगे। ठीक है,
लेकिन ईयू ने एक जो बेसिक प्रिंसिपल प्रोवाइड कर दिया, उसने ये कह दिया कि सारे सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं। जब आप ये बात करेंगे तो जितने मेंबर स्टेट हैं वो तो ईयू के मेंबर हैं, तो ईयू तो वन यूनिट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मेंबर स्टेट जो है वो ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है और दूसरी जो है वो कम प्रोवाइड कर रही है। उसमें लॉस तो ईयू सिटीजन का है। ठीक है, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए मैंने इसीलिए पहले कहा था ना कि कंफ्यूजन रहेगी चीजों में, और उसकी जो बेसिक रीजन है वो यही है कि जैसे जैसे सिचुएशन देखें, लॉज आप बना लेते हैं। ठीक है, लॉज में ग्रे एरियाज क्यों रखे जाते हैं? लॉज कभी भी कंप्रिहेंसिव नहीं होते कि वो हर किस्म की सिचुएशन को टैकल कर। ठीक है, हर किस्म की सिचुएशन टैकल नहीं कर सकते, तो उनमें ग्रे एरियाज रखे जाते। वो ग्रे एरियाज कवर करना काम होता है कोर्ट्स का। उन ग्रे एरियाज को कोर्ट्स कवर करते हैं, उस गैप को फिल करते हैं। ठीक है, हर चीज के लिए पार्लियामेंट के पास नहीं आप जा सकते, और पार्लियामेंट एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत तो बिल पास करेगी, तो लॉ पास करेगी। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को कम करने के लिए, और बीइंग पिलर ऑफ स्टेट जो है वो जुडिशरी काम करती है। ठीक है, तो उस गैप को कवर करेगी। अब आपको कंफ्यूजन क्यों मिलती है चीजें? इसमें जो मिलती है कि एक राइट है, लेकिन सिचुएशन जो है जब डिफरेंट हो जाती है या कोई नई सिचुएशन आती है, तो उसके लिए कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ता है उसी लॉ को। कोर्ट कहती है लॉ तो यही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सर्कमस्टेंसेस वेरी कर रहे हैं, तो ये एज इट इज अप्लाई नहीं होगा, एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी। ठीक है, यहाँ पे जितनी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आगे भी, इससे पहले भी जब मैं पढ़ी है, वो केस लॉ बेस्ड मिलेंगी आप। ठीक है, वो केसेस में डिफाइन कर रहे हैं क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, वो तीन चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की, जैसे ठीक है जो हमने ऊपर पढ़ी, पब्लिक सिक्योरिटी की बात होगी, पब्लिक हेल्थ की बात होगी, पब्लिक पॉलिसी की बात होगी। ठीक है, वो अब उन्होंने एक्सप्लेन तो कर दी हैं, लेकिन उसको आर्बिट्रेरली कोई भी मेंबर स्टेट अप्लाई नहीं कर सकते। उनको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, lastly, Article 27(2) of the Citizenship Directive indicates that measures taken on the ground of public policy or public security must be proportionate and must be based exclusively on the personal conduct of the individual concerned. Pursuant to Article 27(2), such conduct must a present a sufficiently serious threats affecting one of the fundamental interests of the society. ठीक है, अब ये उसी की explanation है। ठीक हो गया, justification that are isolated from the particulars of the case or that rely on consideration of general prevention shall not be accepted. In case the CJEU held that enforcement measures taken on the ground of public policy or public security do constitute restrictions on the free movement of citizens and the right of residence enjoyed by union citizens. However, they may be justified if they are based solely on the personal conduct of the relevant individual and comply with the principle of proportionality. The measures must also be no less favorable than those measures in national law that to third country nationals in the same situation. The court then went on to hold that period of 8 month detention goes beyond what is necessary to achieve such public policy security needs. ठीक है जी, the public service exception, Article 45(4) TFU provide an exception to the provisions on the free movement of workers in relation to employment in the public service. This exception has also been by the court. The court has held that there should be a union. साथ साथ चल रहे हैं ना,
The court has defined the scope of public service narrowly, finding that it is a question of the nature of the post, not the institution which is the employer. In case concerning employment, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे स्टूडेंट किया The court stated that the aim of exception was the protection by member state of rights to exercise state sovereignty by restricting access to certain parts of the public service. The application of Article 45 for TFU could not depend solely on the designation of the legal relationship between the employer and the administration. If it did, this would enable member states to determine at will what posts should be covered by the exceptions. As the court had pointed out in case, employment in the public service must be understood as meaning those posts which involve direct or indirect participation in the exercise of powers conferred by public law and duties designed to safeguard the general interest of the state or of other public authorities. Such posts, in fact, is presumed on the part of those occupying them the existence of a special relationship of allegiance to the state and reciprocity of rights and duties which form the foundation of the bond of nationality. For further example on the interpretation of public service exception, see case so and so. ठीक है जी, इसमें उन्होंने पब्लिक सर्विस की बात की है। पब्लिक सर्विस के लिए कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी में फॉल करती हैं और कौन सी नहीं करती। ठीक है, citizenship and free movement of rights. The concept of EU citizenship was first introduced by the Treaty of Maastricht. Article 20 TFEU gives a definition of citizenship and sets out the rights protected. Article 9 TFEU further states that every national of a member state shall be a citizen of the Union. Citizen of the Union shall be additional to and not replace national citizenship. ठीक है जी, मतलब अगर वो किसी दूसरी स्टेट की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी जो नेशनल सिटीजनशिप जो है वो एक्सक्लूड नहीं होती, हो जाएगी, रिप्लेस नहीं कर देगा उसको। मतलब जर्मनी का अगर है और वो जाके फ्रांस की लेता है, ठीक है, सिटीजनशिप, तो ऐसा नहीं होगा कि जो जर्मनी की उसकी नेशनैलिटी है ये सिटीजनशिप वो खत्म पैमाने पे काम। क्या चीज ये लग तो ऐसे ही रहा। बिल्डिंग की टेंशन क्यों है, उसका बैकग्राउंड नहीं बताया तूने बच्चों को। बिल्डिंग की टेंशन इसलिए है कि अगर बिल्डिंग गिर गई तो पढ़ नहीं पाएगा। असल टेंशन पढ़ाई की है, बैकग्राउंड में चल रहा है ना पीछे वो पढ़ाई के। सर इसको, इसके लिए ना कोई रोक सकता है ना इसको कोई रोक सकता है, इसलिए आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
and is totally dependent upon nationality of a member state. Conferral of nationality is an exclusive competence of member state. When exercising competence with regard to the acquisition and loss of nationality, member state must have due regard to EU law such as the principle of proportionality. ठीक है जी. In case the court held that Article TF 20 TFEU does not in principle preclude national legislation that provides under certain conditions for the loss by operation of law of the nationality of that member state, which in turn entails the loss of union citizenship. However, the competent national authorities, including national courts, where appropriate, must be in a position to examine the consequence of the loss of that nationality, particularly with reference to the principle of proportionality, including the consequence of that loss for the person concerned and, if relevant, for that of their family members from the point of view of EU. हाँ, तो वो जाहिर है नेशनल, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तानी नेशनल है, कोई भी ऑफेंस करे ऐसा तो नहीं हो सकता पाकिस्तानी नेशनैलिटी हमसे ले लें. तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि ईयू के जो सिटीजन, ठीक है, जो होस्ट मेंबर स्टेट उनको नेशनैलिटी प्रोवाइड करेगी. कितनी 24 होगी थी स्लाइड्स हमारी 25 से. ऑन है अभी, सिर्फ खलील ही, खलील है ऑन है, सॉरी हमाद रफीक. In case so and so, an Estonian national residing in Austria who applied for Austrian nationality, she was assured by the authorities that she would be granted the nationality if she could prove within 2 years that she had relinquished her Estonian nationality, and she made the necessary step as a result. However, the Austrian authorities finally rejected her application for Austrian nationality, which meant that she became stateless. The rejection was based on the ground that she committed several administrative offenses, such as drunk driving. The Grand Chamber of the Court of Justice considered that the matter fell under EU law, as when the assurance was revoked, JY was stateless and had lost her EU citizenship. However, losing EU citizenship was not voluntary and was done within the context of her upcoming application for Austrian nationalization. JY was therefore in a situation where she was deprived of her rights attaching to the status of EU citizen as per Article 20. Furthermore, she complied with the cross-border element provided for in Article 21, as she had moved from Estonia to Austria, where she was seeking naturalization. The court concluded that the Austrian authorities were required to determine whether their decision to revoke the assurance to grant citizenship was compatible with the principle of proportionality, or that requirement was not satisfied if the decision was based on administrative traffic offenses that, under Austrian law, only gave rise to a fine. Indeed, there was a little evidence that JY represented a genuine, present, and sufficiently serious threat affecting one of the fundamental interests of society or a threat to public security in Austria. In case the Court of Justice address the question of whether in the application of an extradition agreement with a non-member state, the nationals of another member state must enjoy the same protection against extradition as its own national. Under the principle of non-discrimination on grounds of nationality and the freedom of movement and of residence of union citizens. The Court of Justice found that in the absence of EU law to regulate this situation, it is necessary to implement all the cooperation and mutual assistance mechanisms provided for under EU law. The treaty also confers to EU citizens certain political rights, such as the right to diplomatic or consular protection by authorities of any member state on the same condition as the national of that member state, and the right to petition the European Parliament to apply to the European Ombudsman
and to write to the institution or bodies in any of the official European languages and receive an answer in that language. Such rights were lost by many British citizens residing abroad following Brexit. Case and so concerned EP, a British national residing in France since 1984 and married to a French citizen, following the entry into force of the withdrawal agreement. She was removed from the electoral roll and could not take part in municipal election in France. EP argued that she lost all her political rights as given she has resided abroad for more than 15 years. She was barred by British law from taking part in election in UK as well. The National Court asked the ECJ whether British nationals who, like EP, transferred their residence to a member state before the end of transition period laid down in the withdrawal agreement continue to benefit from the status of citizen of the Union. If that is not the case, the court asked the Court of Justice to assess, in particular in the light of the principle of proportionality, the validity of the withdrawal agreement. The Court of Justice replied that British nationals residing abroad no longer enjoy the status of citizens of the Union nor the right to vote and to stand as a candidate in municipal election in their member state of residence. This is because citizenship of the Union requires possession of the nationality of member state. The mere exercise of free movement rights before Brexit does not enable individuals to preserve their status as EU citizens. एक्सप्लेन हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात की जा रही है कि अगर एक मेंबर EU सिटीजन जो है वो किसी दूसरी स्टेट में जाके अगर रहता है और इतने लंबे टाइम के लिए रहता है कि उसको वहां पे सिटीजनशिप मिल जाती है, क्या उसकी सिटीजन का राइट जो है, सिटीजनशिप का राइट जो है वो रिवोक किया जा सकता है या नहीं? ठीक है, तो तीनों जो केस लॉज हमने पढ़े हैं उसमें उन्होंने यही एग्जांपल कोट की है कि वो उसका राइट रिवोक करने का जो डिस्क्रेशन है वो नेशनल कोर्ट के पास है और वो सजेशन ले सकते हैं ईसीजी से भी। उसमें इन्होंने पहली एग्जांपल जो कोट की है वो उससे रिलेटेड है जो बिटवीन मेंबर स्टेट्स है, ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है वो कोट की गई है बिटवीन मेंबर स्टेट एंड नॉन मेंबर स्टेट। जो नॉन मेंबर स्टेट जो है जैसे यूके की उन्होंने एग्जांपल दी है उसमें भी जो एक सिटीजन थी यूके की जो वहां पे पिछले 15 साल से रह रही थी, वो इलेक्शंस जो फ्रांस में होने जा रहे थे, म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो थे उसमें वो उसका हिस्सा बनना चाह रही थी, जिसको ब्रेक्जिट की वजह से चूंकि वो यूके की नेशनल थी तो उसको उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो एज एन कैंडिडेट अपीयर हो सके। इस प्रपोजिशन को उसने अपने नेशनल कोर्ट में चैलेंज किया, नेशनल कोर्ट ने इस पर सजेशन ली ईसीजे से, जिसपे ईसीजे ने नेशनल कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करते हुए कहा कि चूंकि जो उनका विड्रॉल एग्रीमेंट है, ये आपको शायद अगर याद हो या ना हो कि मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक दफा, कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब वो यूके ने ब्रेक्जिट किया था उसके बाद उन्होंने एक टाइम फ्रेम सेट किया था 2 साल का गालिबन, जिस दौरान वो इस उनका विड्रॉल एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद वो कंप्लीटली एग्जिट कर जाएंगे ईयू से। तो ये जिस टाइम का केस है वो उस दौरान यूके का विड्रॉल एग्रीमेंट चल रहा है, तो उसमें भी कोर्ट ने यही हेल्ड किया हुआ है कि बेशक वो एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग है लेकिन वो इस चीज को इफेक्ट नहीं करता और इसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो ये पार्ट बने से। लेकिन उन्होंने उसमें वो बात वही की हुई है कि अगर वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा उसका एक्ट, ठीक है, तो फिर तो वो उसके कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, आपको एक और चीज एक्सप्लेन करूं कि जो ट्रैफिक ऑफेंसेस होते हैं ना वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस कौन से होते हैं?
आप में कोई भी ऑफेंस होगा ना, उसके इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। मेजर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं ऑफेंसेस के? क्रिमिनल लॉ थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस में मेंसरिया रिक्वायर्ड ही नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसी तरह ट्रैफिक ऑफेंसेस जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस हैं, उसमें आपका मेंसरिया रिक्वायर्ड नहीं है। आपका जो एक्शन है वो इटसेल्फ सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए आपने क्राइम कमिट किया, ठीक है। अब एक बंदा, लेट सपोज एक रोड पे स्पीड लिमिट है 60 या 50, वो उस रोड पे 80 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो उसमें, और वो ये, अगर वो ये क्लेम करेगा कि चूंकि उसकी गाड़ी में पेशेंट था, उसने उसको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाना था, इसलिए वो स्पीड पे जा रहा था, तो उसका ये आर्गुमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। उसकी वजह ये है कि उस रोड पे अगर स्पीड लिमिट उन्होंने एक स्पेसिफाई की भी है, उसको अगर कोई एक्सीड करेगा तो लाइफ थ्रेट है, ठीक है। तो जो वो गाड़ी में एक जिंदगी बचाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, जितनी वो प्रीशियस है उतनी प्रीशियस वो लाइफ है जो रोड पे चल रही है। तो इसलिए आपका वो आर्ग्यूमेंट वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ड्रंकन ड्राइविंग जो है वो एक ऑफेंस है। आप उसमें आप ये प्रूव कर देंगे जो आपकी इंटॉक्सिकेशन है ये इनवॉलेंट्री है, वो तो एक अलग चीज है। जब वॉलेंट्री टॉक्सिकेटेड है आप, ठीक है, तो फिर आप लाइबल हैं उस फाइन के भी, उस ऑफेंस के भी जो आपने कमिट। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे बट फॉर टेस्ट अप्लाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक्टर सीरियस सफिशिएंट है ना आप, बट फॉर टेस्ट तो आप वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे आपने फोर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस देखने, ठीक है। जैसे एक केस था गालिबन आर वर्सेस स्मिथ का था, ठीक है। उसमें एक बंदे ने दूसरे बंदे को छुरी मारी, ठीक है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, वो हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन हॉस्पिटल पहुंच के जो उसकी डेथ जो है वो हुई नेग्लिजेंस की वजह से। नहीं, वो जो केस है वो और है, वो मैंने आपको बताया था चेन ऑफ कॉजेशन का केस है, वो ब्रेक इन चेन ऑफ कॉजेशन। आर वर्सेस ब्राउन है या आर वर्सेस वाइट है, ये वैसे आर वर्सेस ब्राउन, आर वर्सेस वाइट, ये दोनों एग्जांपल है ब्रेक इन चेन ऑफ कॉजेशन। तो इसका लीडिंग केस जो है वो मेरा ख्याल है आर वर्सेस ब्राउन है, ठीक है। उसमें उसमें हुआ था कि वो अपनी माँ को पॉइजन दे रहा था, वो डिफरेंट, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है उसका हार्ट अटैक था, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हो। उसमें भी उसको पनिशमेंट मिली, उसने कहा जी कि मैंने तो उसको स्टैब किया था, सिर्फ जो डेथ है उसकी वो हो रही है डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, चेन ऑफ कॉजेशन तो ब्रेक हो जाती है। उसने बट फॉर टेस्ट अप्लाई किया कि अगर ना तुम उसको स्टैब करते, ना वो हॉस्पिटल जाता, ना नेग्लिजेंस होती, ना उसकी डेथ, उस कंडीशन में अप्लाई हो। एक्टर्स जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस है उसमें आपका जो एक्शन है वो इट्सेल्फ सफिशिएंट है आपका ऑफेंस प्रूव करने, ठीक है। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में कोई लीनियंसी नहीं, मतलब आप इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास डिफेंस का राइट ही नहीं है, ठीक है। राज अली भी इसी सेशन में है ना? खलील तो नहीं है? द अच्छा जी, कौन सी स्पेसिफिक अथॉरिटीज? Directive 2004 oblique 33 on rights of union citizens and their families. This directive replaces the following directives. Directive on right of entry and residence for workers and their families. Directive in relation to establishment and service providers.
Directive on general right of residence, directive on residence rights of retired person, directive on residence right of students, directive 64 oblique 221 on the refusal of entry or residence on the ground of public policy, public security, and public health. Directed amended regulation on free movement for workers, in turn repealed by a regulation on freedom of movement of workers. The basic concept behind the directive is that EU citizenship is the fundamental status of those exercising their right to freedom, free movement, rather than their particular status as worker, self-employed, student, etc. The directive applies to union citizens and their family members, but only if they move to or reside in a member state other than that of which they are national. This would still exclude the purely internal cases, such as joint cases so and so. Which family members are covered? Right change. Article 2, sub-article 2 defines family members covered by the directive. It includes the spouse. Interpreting the concept of spouse under X regulations, the court held that it means husband or wife, not cohabiting partner. C case so and so. The directive gives. अच्छा वो मैंने लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था आपको. कोहैबिटिंग पार्टनर्स वो होते हैं जैसे वहाँ पे कॉन्सेप्ट है लीगल है पार्टनरशिप किसी के भी दरमियान हो सकती है. दो दो दोस्तों के दरमियान हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान हो सकती है, ठीक है, को शेयरर्स के दरमियान हो सकती है, पार्टनरशिप किसी के दरमियान हो सकती है. हाँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो कोहैबिटिव पार्टनर्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो रही है, या हस्बैंड या वाइफ. ठीक है जी. The directive gives registered partners the status of family members as well as spouses, but only where legislation in the host member state recognizes registered partnerships. जहाँ पे वो पार्टनरशिप अगर recognize कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी किस्म की, तो वो वहाँ पे उस चीज को कंसिडर किया जा सकता है. लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया कि जहाँ पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है ना, जैसे मैंने कहा इंग्लैंड में अब ये इस तरह बाकी जो पार्टनरशिप की मैंने एग्जांपल्स कोट की हैं वो अलाउड है, ठीक है, बाकी जगहों पे नहीं होगी, बाकी कंट्रीज में हो सकता है ना हो. वहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही लिया जाएगा, वो हस्बैंड वाइफ का. ठीक है. उसके साथ आगे क्या है, द डायरेक्टिव गिव्स रजिस्टर्ड पार्टनर्स द स्टेटस ऑफ फैमिली मेंबर्स एज वेल एज स्पाउसेस, बट ओनली वेयर लेजिस्लेशन इन द होस्ट मेंबर स्टेट recognizes registered partnerships. ठीक है जी. हाँ हाँ. नहीं, लेकिन वो यही बात कर रहे हैं ना. लेकिन यहाँ से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, ठीक है, तो वहां पे उसको अलाउड होगी पार्टनरशिप. वो यही बात कर रहा है ना, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें. द डायरेक्टिव गिव्स रजिस्टर्ड पार्टनर्स द स्टेटस ऑफ फैमिली मेंबर्स as well as spouses, but only where legislation in the host member state recognizes registered partners. ठीक है जी. And but only and only on the terms of the relevant national legislation. तो मजीद फर्दर एलैबोरेट कर दें. ठीक है जी. There is also acknowledgement of cohabitation in Article 3, sub-article 2b of the directive, which says that member state should facilitate the entry of a partner with whom the union citizen has a durable relationship duly attested. ठीक है जी. However, no definition is provided of durable. ठीक है जी. Nor are there details of how the relationship may be attested. Member state must carry out an extensive examination of personal circumstances and justify any refusal of entry or residence partners. ठीक है. अलाउ करके साथ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करके फिर उसके बाद डिस्क्रेशन भी दे देते हैं. ठीक है. The provision in relation to children, Article 2, sub-article 2c covers direct descendants who are under the age of 21 or are dependents. ठीक है जी. But also specifically includes those of the spouse or partner. This recognizes the fact that
With divorce and remarriage, the children of the family may not necessarily be the children of both the spouses partners. ठीक है जी? Other family members such as sibling, uncle, cousins, etc. still have no automatic right to accompany the worker. But under Article 3, Sub-Article 2A, member state should also facilitate the entry of other family members not covered by Article 2, Sub-Article 2, who are dependent on EU national or members of their household, or where serious health grounds strictly require the personal care of the family member by the union citizen. Again, the member state must carry out detailed investigation and justify any refusal of it. ठीक है जी? If a person has worked in another member state and then returned home, their family members keep their EU law rights even after returning to the home state. Administrative requirements. In its case law, the court had made clear that a residence permit was merely documentary evidence of the right to reside, the source of the right being the treaty itself. ठीक है जी? The directive sets out certain administrative requirement for union citizens and family members. Point समझ आ गया पहले वाला? Clear? Consequences of death, departure, divorce, or termination of registered partnership. Article 12 provides for the retention, subject to certain condition, of the right of residence by family members in the event of death or departure of the union citizen. Article 13 provides for the retention, subject to certain conditions, of the right of residence by family members in the event of divorce, annulment of marriage, or termination of registered partnership. इनमें सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन की हुई है कि किन किन कंडीशन में कौन कौन से जो पार्टनर्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो रिटेन किए जा सकते हैं होस्ट मेंबर स्टेट। ठीक है जी? The right of permanent residence, Article 16 create a right of permanent residence once an EU citizen or family member, EU or non-EU, has been lawfully resident in the host state for 5 years. Once the right of permanent residence has been acquired, it is no longer necessary to establish that the person is a worker, self-employed, or has sufficient own resources. The right can be lost if the person is absent from the host state continuously for 2 years. Article 17 to 23 then go on to describe the various situations when permanent residence can be acquired. ठीक है जी? वो सारे यार उसके साथ बैठे हो, अकेला किधर है? वो गोली करवा के गया है। Extension of the principle of equal treatment. Article 18 TFU prohibits discrimination in the matters within the scope of EU law, and Article 21 TFU sets out the right of all citizens to move and reside freely within the territory of the Union. The latter article functions in tandem with Article 45 TFU on the free movement of workers and extend the freedom of movement to the non-economically active. The court has found that where an EU citizen is in fact lawfully resident in another member state, their situation is within the scope of the EU treaties. They therefore have a right not to be discriminated against under Article 18 TFEU, even if they do not fall into one of the economic categories recognized by the EU law. अब ये थोड़ी सी चीजें जो है ना वो कंफ्यूजिंग हुई, ठीक है? वो इस पे कंफ्यूजिंग है जो एक राइट आप वेट कर रहे हैं
सब्सिक्वेंटली वही राइट आप ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला है वो ये है कि इन सारे सर्कमस्टांसेस में जो सिचुएशंस हैं वो वेरी करती हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये जो राइट्स इसको प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ जॉब सीकर, एज अ वर्कर वहां पे, ठीक है। वो उसको सर्टन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी हैं उसके ऊपर कि इन कंडीशन में 3 मंथ से ज्यादा वो स्टे नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम 6 मंथ कर पाएगा, और उसके बाद उसके पास अगर कोई रीजनेबल कॉज होगा या जस्टिफाइड कोई रीजन होगी तो उसको आगे फर्दर वो जॉब मिल सकती है, तो फिर वो रह सकेगा और वो वहाँ पे बेनिफिट्स एंजॉय कर सकेगा। उसके साथ साथ वो आगे यही अब इस सेंटेंस में यही बात कर रहा है कि जितने भी सिटीजन हैं वो ईयू के सिटीजन हैं और उनको किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, तो इनको इक्वल राइट प्रोवाइड किए जाएंगे वो किसी भी मेंबर स्टेट में डिसाइड करें, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो इन्होंने ऑलरेडी इम्पोज कर दी हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए राइट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है जी। However, note that Article 24, one of the directive, provides that only those living in another member state on the basis of directive shall enjoy equal treatment with the nationals of the member state within the scope of treaty. This only confers a right to equal treatment to people covered by a directive and falls short of the application of equal treatment generally for citizens of the EU lawfully resident in another member state. Right of residence and primary carriers. Over the time, the citizenship concept began to have an impact on the rights of residents of the non-economically active. One of the most important case in this aspect is हाँ, नॉन इकोनॉमिकली एक्टिव जो होंगे वो मतलब जॉब सीकर होंगे, जॉब सीकर ही होंगे ना। नॉट नॉन इकोनॉमिकली एक्टिव मींस कि वो जॉब सीकर्स हैं ना। हम्म, वो तो ईयू अंडर ईयू लॉ जितने भी मेंबर स्टेट के सिटीजन है ना वो तो सिटीजनशिप उनको मिलेगी दूसरी स्टेट में, लेकिन ओवर द सर्टेन टाइम उनको ये राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो नॉन इकोनॉमिकली एक्टिव है ना उनमें सिटीजन्स की उनकी बात हो रही है जो वो स्टेट में रिजाइड कर रहे हैं और वो बेनिफिट्स ले रहे हैं वहां पे। देखिए मैंने आपको पहले वो एक्सप्लेन की ना वो चीज कि जो यूके के सिटीजन है ना वो नॉन इकोनॉमिकली एक्टिव जितना मर्जी टाइम रहे, यूके बाउंड है उनको फैसिलिटेट करने की, ठीक है। ये उनके पास इम्पोजिशन होती है कि जब वो अगर उनको जॉब मिल जाती है या उनका कोई बिजनेस या कोई सेटअप क्रिएट हो जाता है उसके बाद उन्होंने टैक्स तो प्रोवाइड करना है, साथ साथ वो सारी चीजें उनके ऊपर फाइन की सूरत में, फाइन कह रहा हूँ, टैक्स की सूरत में उनके ऊपर इम्पोज करके वो गवर्नमेंट जो है उनसे वापस भी लेती है ताकि वही बेनिफिट किसी और को प्रोवाइड किए। नॉन हाँ वो उस कैटेगरी में लेके जाए। देखिए ओवर द टाइम द सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट बिगेन टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स of the non-economically active. One of the most important case in this respect is अब यहाँ पे over the time the citizenship के concept की बात हो रही है वो नेशनल लॉज के अंडर नहीं बात हो रही, वो ईयू लॉज के अंडर बात हो रही है। तो ईयू जब भी सिटीजन की बात करेगा वो सारे मेंबर स्टेट के सिटीजन की बात करेगा। ईयू को आप एक स्टेट समझ लें, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ईयू को आप एक स्टेट समझ लें कि जितने मेंबर स्टेट उसके अंदर आ रहे हैं वो ईयू के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट की बात होगी ना, देखें उस चीज को आप इसलिए अलग से रखें अंडरस्टैंड करने के लिए और कंफ्यूजन दूर करने के लिए। जैसे आप पाकिस्तान के नेशनल हैं तो आप उसमें कैटेगरी जब आप उसकी बात करेंगे तो आपकी सिटीजनशिप के
पाकिस्तान के हवाले से तो नहीं बात होगी ना, ठीक है। आपकी बात होगी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हवाले से अगर बात करेंगे तो आप किसी और मेंबर स्टेट की बात करेंगे। पाकिस्तान की तो सिटीजनशिप आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जहाँ पे सिटीजनशिप की बात हो रही है वो ईयू लॉ के अंडर बात हो रही है, नेशनल लॉज के रिलेटेड बात नहीं की जा रही, ठीक है। ये जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है ना, ये बीइंग ईयू मेंबर स्टेट का नेशनल जो होम मेंबर स्टेट से किसी और मेंबर स्टेट में जाए, ठीक है। हाँ, उसको आपने इसलिए अंडरस्टैंड करना है कि आपने स्टार्ट से लेके अभी तक एक ही चीज पढ़ी है कि ईयू के जितने नेशनल्स हैं, ये जितने मेंबर स्टेट्स हैं, उनके जितने नेशनल्स हैं, उनको सेम राइट्स, इक्वल राइट्स और इक्वल बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाएंगी। डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो है वो बियरेबल भी नहीं है, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब वो वेरी करेगा नेशनल लॉज में, किसी जगह पे उन्होंने नेशनल लॉज को डिस्क्रेशन दिया है, किसी जगह पे नहीं दी, ठीक है। अब जहां पे नेशनल लॉज को भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है। 3 मेजर कंडीशन तो हमने हर जगह पढ़ी है ना। किसी भी स्टेट को अगर किसी भी किस्म की ईयू पॉलिसी को अगर उसने डिनाई करना है, उसके पास 3 ग्राउंड्स हमेशा अवेलेबल है, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। उसको मद्देनजर रखते हुए वो उनको रिफ्यूज कर सकते। जॉब सीकर्स ही हैं, नॉन इकोनॉमिकली एक्टिव वही होंगे जो इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं दे पा रहे, या वो इकोनॉमिकली सेटल नहीं, ठीक है। उसमें हमने ऊपर भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि नॉन इकोनॉमिकली एक्टिव जो हैं उनको क्या क्या अलाउंसेस दे सकते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर तो वो नेशनल है तो स्टेट तो बाउंड है उसको प्रोवाइड करने की, ठीक है। स्टेट तो बाउंड है ना, उसने उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पे जो सिटीजनशिप की बात हो रही है वो ईयू के सिटीजन की बात हो रही है। हाँ, इकोनॉमिकली जो बर्डनाइज करते हैं ना इस तरह मेंबर स्टेट के नेशनल किसी और मेंबर स्टेट में जाके, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अब वर्कर्स जो हैं वो बेशक होस्ट मेंबर स्टेट में उनके राइट्स डिफरेंट हैं, और जो जॉब सीकर्स हैं उनके राइट डिफरेंट हैं। अब वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे ना। जो जॉब सीकर है अगर उसको भी आपने वही बेनिफिट प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, ठीक है, तो फिर तो उनके लिए जो नेशनल लॉज हैं उनको उनके इकोनॉमिकली उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाए। अब एक बंदा जो अपने मेंबर स्टेट में कुछ नहीं कर रहा और वहां से बेनिफिट ले रहा है, ठीक है, सर्टेन कंडीशंस हैं उसको बेनिफिट मिलेगा, और वो उसका टाइम स्पैन वहां पे पूरा हो जाता है, उसके बाद वो उसको उस तरह के बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करते, वो दूसरी जगह जाके वो बेनिफिट लेना शुरू कर दे, तो वो तो कभी जिंदगी में काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस तो इम्पोज करनी है, इक्वल लॉज इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में उनको सिकनेस इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि इतने टाइम के बाद वो नहीं कर पाएंगे तो फिर उनके पास अपने इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, ठीक है ना। The court considered the situation of a mother who was the primary carer for the children, who had been refused to have to leave to remain refused leave to remain because she was married to an EU national who was no longer a migrant worker. The court found that the right conferred by Article 12 of regulation on the child of a migrant worker to pursue under the best possible condition their education in the host member state necessarily implies that that child has the right to be accompanied by the person who is their primary carer, and accordingly that person is able to reside with the child in that member state during the child studies. To refuse to grant permission to remain to a parent
who is the primary carer of the child while the children complete their education infringes that right. ठीक है, अब इसमें उसको उन्होंने परमिशन उसकी खत्म कर दी थी। हमने ऊपर लास्ट टॉपिक में ये आपको वो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। लास्ट टॉपिक में हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक जो वर्कर है वो किसी मेंबर स्टेट में या सर्विस प्रोवाइडर है वो किसी होस्ट मेंबर स्टेट में रिजाइड कर रहा है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी वो राइट्स मिलेंगे कि उसकी वो जो पार्टनर है वो वहाँ पे रहे, उसके बच्चे वहाँ पे रहें और उसी तरह वो बेनिफिट्स एंजॉय करें जो बाकी सारे करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह वो राइट्स एंजॉय करें जो वहाँ के नेशनल एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उनको वही स्टडीज और ये जो वर्कर्स हैं उनको वो जो बाकी सारे जो उनके नेशनल्स हैं उनको राइट प्रोवाइड कर रहे हैं, वही वर्कर्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका वो जॉब इस दौरान वो जॉब लूज कर देते हैं। ठीक है, तो उनके बच्चे अगर वहां पे स्टडी कर रहे हैं तो उनको स्टडी करने दिया जाए अनलेस अनटिल वो अपनी एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट करनी। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है और वो उसका चूंकि वो उसकी अल्टीमेट केयरर है उसकी माँ जो है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो उसको यहाँ से निकालने की बात की जा रही है इन्फ्रिंजमेंट है उस राइट की जो ईयू लॉज प्रोवाइड करे, जो डायरेक्टिव प्रोवाइड करे। ठीक है जी, सर कोई मुश्किल? Second, the court also considered that a citizen of the EU who no longer enjoys a right of residence as a migrant worker in the host member state can, as a citizen of the EU, enjoy a right of residence, thereby relying on citizenship provision. ठीक है जी, while the exercise of that right was subject to certain conditions, in particular having sufficient resources and sickness insurance, any limitation on the right would need to comply with the principle of proportionality. ठीक है, अब ऊपर बड़ी कैटेगरी के लिए वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और एंड में एनी लिमिटेशन ऑन द राइट वुड नीड टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का डिस्क्रेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वो पूरे तरीके से उसको प्रोवाइड कर रहा है कि अगर वो किसी मेंबर्स होस्ट मेंबर स्टेट में उसका नेशनल्स के राइट अगर वो एंजॉय नहीं कर पा रहा तो बीइंग अ ईयू सिटीजन वो उस राइट को एंजॉय कर सकता है, लेकिन अगर कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है तो वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर बेस करनी चाहिए। ठीक है, so and so is also worth mentioning. Mr. Chen, a non-EU national, traveled Northern Ireland where she gave birth to a baby. Under Irish law of that time, nationality was conferred on every child born on the island. Northern Ireland included. Baby Catherine, an Irish national, became therefore an EU citizen. When they moved to England and were not granted a residence permit, they challenged the decision on the basis of the daughter's right of residence within the EU. The court found that to deprive the mother of residence would be to effectively deprive the child of the right to residence as provided under Article 21(1) TFE. ठीक है जी? In case the court seems to have embraced a wide concept of citizenship, in this case, the court held that EU law conferred a right of residence to a non-EU national parent of an EU citizen in order to prevent In this case, the court held that EU law conferred a right of residence to a non-EU national parent of an EU citizen in order to prevent the deprivation of
child's enjoyment of benefits of citizenship, the Court of Justice held that Article 20 TFEU would only preclude a member state from refusing to grant a right of residence to an individual whose children are EU citizen with nationality and residence in the member state concerned if such a refusal would deprive the children of genuine enjoyment of substance of the right attached to their status as EU citizen. The, the potentially wide scope of the judgment has been restricted in later rulings. The applicant had dual UK and Irish nationality. She was born and had always lived in the UK. In 2004, she and her husband applied to the Secretary of State for residence permit and residence document under EU law as respectively a union citizen and the spouse of a union citizen. The Secretary of State refused their application on the ground that she was not a qualified person, essentially a worker, self-employed person, or self-sufficient person, and accordingly that her husband was not the spouse of qualified person. ठीक है, qualified person की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इसी टॉपिक में उन्होंने डिफाइन की, ठीक है। तो चूंकि वो क्वालिफाई नहीं करते थे दोनों, इसलिए उनका रिफ्यूजल जो है वो सेक्रेटरी की तरफ से उनको रिफ्यूजल दे दिया गया, ठीक है। The court ruled that directive is not applicable to a union citizen who has never exercised their right of free movement, who has always resided in a member state of which they are national, and who is also a national of another member state. It held further that Article 21 TFU is not applicable either, provided that the situation of that citizen does not include the application of measures by a member state that would have the effect of depriving them of genuine enjoyment of the substance of the rights conferred by virtue of their status as a union citizen or of impeding the exercise of their right of free movement and residence within the territory of the member state. ठीक है जी. The court later confirmed this very restrictive reading of case. This was a joint case of 5 applicants, each of whom was a third country national which wishing to reside in Austria with their Austrian family members. None of the applicant family members had exercised their right to free movement within the union. The court, in interpreting the test of genuine enjoyment of the substance of citizenship right, stated that such a criteria refers only to situation in which the union citizens has to leave not only the territory of the member state of which they are national, but also the territory of the union as a whole. The finding was without prejudice to the question of possible infringement of the right to respect for private and family life, with the court leaving the issue of whether the current situation fell within the scope of EU law to be determined by the referring court. क्या चीज? ये उस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं ना, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ईयू मेंबर स्टेट में रह रहे हैं और उस बेस पे आप अप्लाई करते हैं किसी नॉन मेंबर स्टेट से कि आपको जो है वो सिटीजनशिप राइट प्रोवाइड किया जाए, उसमें वो बात कर रहे हैं जेन्युइन एंजॉयमेंट ऑफ सब्सटेंस की, कि आप उस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको आप फुलफिल अगर नहीं करते तो आप वो राइट एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। वो उससे रिलेटेड बात हो रही है, फैमिली मेंबर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल कोट की कि एक डिपेंडेंट है या अल्टरनेट केयरर है,
ठीक है, तो उसमें अगर वो रिफ्यूज करने हैं तो कोर्ट उनको अलाउ कर दिया राइट सिटीजनशिप का, क्योंकि एक तो अल्टीमेट केयरर जो है जब तक वो वहां पे उसके सर पे नहीं होगा तो उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। ठीक है, जिनको आप डिपेंडेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी कंडीशन में ये है कि उनके लॉज अलाउ कर रहे हैं, जैसे हमने वो आयरलैंड वाला केस पढ़ा है। आयरिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी कि जहाँ पे बच्चे की अगर बर्थ होगी है तो वो उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसकी माँ ने उसको क्लेम किया कि जी वो अगर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको भी देनी चाहिए, उन्होंने रिफ्यूज किया। लेकिन कोर्ट ने इसी ने इसको अपहेल्ड किया कि उसको राइट, सॉरी अपहेल्ड नहीं किया, डिनाई किया कि इसको राइट प्रोवाइड करना चाहिए। एक तो उनके लॉस कहते हैं, दूसरा वो जो बच्चे की चाइल्ड जो जिसकी बर्थ हुई है वहां पे, ठीक है, वो उसके बगैर एंजॉय नहीं कर सकता उस राइट को। ठीक है, यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्शन की वजह यह है कि वो क्वालिफाइड पर्सन में फॉल नहीं करते। ठीक है, और उन्होंने फ्री मूवमेंट का जो राइट है उसको एंजॉय नहीं किया हुआ, लिहाजा उसको वो ये टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पे वो रिफ्यूज करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जी केस लॉस की एग्जांपल है जी। उसके बाद वेयर द कोर्ट कंसिडर्ड द रिक्वायरमेंट फॉर सफिशिएंट रिसोर्सेज ऑफ रेजिडेंस फॉर रेजिडेंस पर्पसेस एंड डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू यूनियन सिटीजन माइनर। ठीक है जी, ये केस लॉस की एग्जांपल है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, द कोर्ट हैज इंक्रीजिंगली डेमोंस्ट्रेटेड a desire to create a single market for education within the union under the basis of union citizenship. In case the court considered the requirement to demonstrate sufficient resources, it concerned the availability of a Belgian social assistance allowance, the minimum, the Belgian minimum wage, to an EU citizen residing as a student in Belgium. Under Article 1 of the directive on the right of residence for students, students were required to make a declaration that they have sufficient resources for themselves and their families. The same rule is now Article so and so. For the first 3 years of this student, the applicant worked to support himself but was unable to do so in his fourth and final year and applied for the minimax. He was refused it as he was not a worker and so was not covered by Article 72 regulations. ठीक है, the court found that a Belgian student in the applicant position would qualify for the minimax. The prohibition on discrimination under Article 18 TFU must be read in conjunction with the provision on citizenship under Article 21 TFU and precluded a member state from refusing a benefit such as minimax to EU nationals. The prohibition on discrimination under Article 18 TFU must be read in conjunction with the provisions on citizenship under Article 21 TFU and precluded a member state from refusing a benefit such as minimax to EU nationals from other member states in circumstances where it would have been available to the member states on nationals. The court said that while member states may withdraw rights of residence from students if they have insufficient resources to support themselves, such a measure must be proportionate and not automatic. The court adopted a similar approach in case when so the applicant was a Belgian national attending school in France. She was denied unemployment benefit. ठीक है, अब उस ऊपर वाला केस है ना, इसमें वो मिनिमम का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको मिनिमम वेज प्रोवाइड की जाएगी अगर आप जॉबलेस हैं या आप रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पा रहे। तो इस कंडीशन में उन्होंने इसको डिस्क्रिमिनेशन इसलिए क्रिएट किया हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में आप कंसिडर करेंगे कि अगर वो राइट जो है वो मेंबर स्टेट अपने होस्ट मेंबर स्टेट जो अपने नेशनल्स को प्रोवाइड कर रही है और जो किसी दूसरे मेंबर स्टेट से उस स्टेट में आए हुए हैं उनको अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रही तो फिर डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, अगर तो वो राइट अपने नेशनल्स को भी प्रोवाइड नहीं कर रही फिर डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो इसमें जो उन्होंने पहले उसको रिफ्यूज किया उसने कोर्ट ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर डिक्लेयर करते हुए और जो राइट ऑफ सिटीजनशिप ईयू लॉ अंडर आर्टिकल 21 प्रोवाइड कर रहा है उसके प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट कंसिडर किया है इसको। और आगे जो है कोर्ट अडॉप्टेड अ सिमिलर अप्रोच इन केस सो एंड सो
The applicant was a Belgian national attending school in France. She was denied unemployment benefits. The court agreed that she was not a worker and not entitled under regulations so and so. However, it held that education is within the scope of the treaty and that the applicant was exercising her benefit to free movement as citizens of the EU under Article 21 TFU. She therefore had a right not to be discriminated against in access to benefits. In case the court ruled that a provision requiring students to be settled in the host member state for the purpose of obtaining a student loan was incompatible with Article 18 TFU. However, in a rather retained mood, the court added that member state could require that the student had established a genuine link with the society of that member state. In case the court confirmed that requirement of a genuine link with the society of that member state could be interpreted as necessitating residency for 5 years before a grant is paid to assist with studies. ठीक है, अब उसमें उन्होंने फर्दर रिक्वायरमेंट ऐड कर दी है 5 ईयर रेजिडेंस की. ठीक है, अगर वो बेनिफिट्स उसके क्लेम करना चाहते हैं बीइंग अ स्टूडेंट तो उनके पास एटलीस्ट परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए और परमानेंट रेजिडेंस की कंसिडरेशन जो है वो 5 ईयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है. ठीक है जी, इसके साथ ही ये चैप्टर जो है हमारा कंक्लूड हो गया. ठीक है, नेक्स्ट